Hello all, welcome to the new session. So from this session we will start the unit number 3, which is about the numerical integration. So again, this numerical integration unit number 3 is divided into the two parts. First is about the 1 degree numerical integration and second is about the 2 degree numerical integration. So here this session is about the trapezoidal rule. So here you can see the contained in unit number 3. So as I said, the numerical integration unit number 3 is divided into the two parts. So first part is about the 1D, that is 1 degree numerical integration, and second is about the double integration or 2D integration. So in this first part we have to discuss total 5 methods are there, like you can see here: trapezoidal rule, Simpson one-third rule, Simpson 3/8 rule, Gauss quadrature 2-point method, and Gauss quadrature 3-point method. So total 5 methods are there in the part number first, and in second part, which is about the double integration, we have to discuss about the trapezoidal rule for double integration and Simpson one-third rule for double integration. So particularly this session is about the trapezoidal rule, right? So let's directly move towards the numerical. Then we will discuss the step-by-step procedure to calculate the area under the curve by using the trapezoidal rule. So here this is the numerical. Here evaluate integration of 0 to 3 2x minus x square dx taking 6 intervals by trapezoidal rule. तो हमें एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है. तो इस केस में हमें पहला मेथड जो है वो ट्रेपोजाइडल रूल यूज करके हम एरिया अंडर द कर्व कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखना है. तो एक अगर न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करना है, तो आप आगे के सारे न्यूमेरिकल जो होंगे ट्रेपोजाइडल रूल के लिए वो आप वो स्टेप यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो. तो हम वन बाय वन देखेंगे और सेम स्टेप आप दूसरा कोई न्यूमेरिकल होगा ट्रेपोजाइडल रूल का, तो वो सेम स्टेप आप रिपीट करके आप मतलब कैलकुलेट कर सकते हो एरिया अंडर द कर्व, राइट? So here in this numerical, the function is given and the limits are given in the numerical. So first you have to write down the given data. So like here, so given is, so as I said, the function is given in the numerical. So here we have to write down like this: f of x is equal to 2x minus x square. This function is given in the numerical. Now you can see here the integration 0 to 3, that means the lower limit and upper limit is also given in the numerical here. So lower limit is denoted by x0, which is given in the numerical, that is 0. You can see here, so x0 is equal to 0. Similarly, the xn means upper limit, also given in the numerical, that is 3. So here write down 3 and taking 6 intervals, right? So here n is also given in the numerical, right? So 6 intervals are given in the numerical and we have to calculate the area under the curve by using the trapezoidal rule, राइट? सो ट्रेपोजाइडल रूल के लिए अलग से एक लास्ट में एक फॉर्मूला है, तो वो मैं आपको बताऊंगा. सिमिलरली जब हम सिम्पसन वन-थर्ड रूल देखेंगे या सिम्पसन 3/8 रूल देखेंगे तो उसके लिए भी अलग से फॉर्मूला है. बट जो बेसिक स्टेप्स है वो तीनों मेथड्स के लिए सेम है. टोटल ऑलमोस्ट 80-90% न्यूमेरिकल आपका सेम स्टेप से आपको सॉल्व करना है, बट जो लास्ट का इक्वेशन होगा वो तीनों मेथड में चेंज होगा, राइट? So here after writing the given data, so first we have to calculate the value of h. So how to calculate the value of h? There is a uh, relation for calculating the value of h after writing down the given data. So here we have to calculate the value of h. So h, for calculation of h, there is a formula: xn minus x0 divided by n. Now you can see here x0 is given in the numerical, xn is also given in the numerical, and 6, that is the value of n, is also given in the numerical. So just you have to put the values which is given in the numerical and calculate the value of h. So here
3 minus 0 divided by 6. So here h is equal to 0.5, राइट। इस तरीके से आपको सबसे पहले h का वैल्यू कैलकुलेट करना है। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ h, so start the first step. So here in this first step, by using this value of h, you have to calculate the values of x. So here we can write down like this: calculate values of x with respect to h, right? So इस तरीके से आपको आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ h you have to calculate the value of x with respect to h. अभी x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द x0 जो कि हमें न्यूमेरिकल में दिया है, x0 इज इक्वल टू 0 न्यूमेरिकल में हमने दिया है, हमको दिया है न्यूमेरिकल में, तो x0 इज इक्वल टू 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे x की सारी वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू h। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे फॉर एग्जांपल x1 अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा x0 प्लस h, राइट। सो x0 इज इक्वल टू 0 प्लस h इज इक्वल टू 0.5, so x1 is equal to 0.5. Now similarly calculate the value of x2, and formula for x2 is equal to x0 plus 2h. So here again 0 plus 2 multiplied by 0.5. So calculate, that is 1. Similarly calculate the value of x3. So x3 के लिए x0 plus 3h, right? So x0 is equal to 0 plus 3 multiplied by 0.5. So here 1.5, right? Now again calculate the value of x4. So x4 is equal to x0 plus 4h, right? x0 is equal to 0 plus 4 multiplied by 0.5. So here 2. Now next is x5. So x5 के लिए हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? x0 plus 5h, right? So x0 is equal to 0 plus 5 multiplied by 0.5. So x5 is equal to 2.5. कैलकुलेट x6. x6 के लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? x0 प्लस 6h इज इक्वल टू 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 विच इज इक्वल टू 3. नाउ यू कैन सी हियर हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई है x6 इज इक्वल टू 3. अभी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि हमें लिमिट कहाँ पे दिया है? 0 to 3 में दिया है, तो x0 की वैल्यू जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ पे होगी? वो 3 के ऊपर। तो हम इसे कह सकते हैं x इज इक्वल टू xn, राइट, जो कि हमें न्यूमेरिकल में ऑलरेडी गिवन दिया है, x इज इक्वल टू 0 एंड xn इज इक्वल टू 3। मतलब x की जो वैल्यू होगी वो h के करस्पॉन्डिंग होगी आपकी x0 से लेके x6 तक। x0 हमें दिया था 0 जो कि न्यूमेरिकल में गिवन था और xn जो कि न्यूमेरिकल में गिवन था 3, उसकी बीच की ये सारी x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, राइट। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ h, you have to calculate the values of x with respect to h, right? Now here we will get the all the values of x, right? Now next step is you have to calculate the values of y with respect to x. Here calculate values of y with respect to x. अभी जितनी सारी वैल्यूज हमने x की लास्ट स्टेप में कैलकुलेट की थी उतनी सारी वैल्यूज हमें y की कैलकुलेट करनी है विथ रिस्पेक्ट टू x की वैल्यूज। अभी वो कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है? हमें हमारे पास फंक्शन गिवन है। फंक्शन हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल में गिवन? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, राइट। तो हम क्या करेंगे?
जो हमारे पास x0 से लेके x6 तक की वैल्यूज है वो हम इस फंक्शन में पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द y0, सो हियर y0 इज इक्वल टू हम लिखेंगे f ऑफ x0। सो जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम x0 की वैल्यू पुट करेंगे। अभी x0 कितना दिया है हमें, x0 कितना था पहला, x0 इज इक्वल टू 0। सो हियर we can write down the equation like this. You can see x 2x0 minus x0 square, राइट। अभी x0 हमें कितना दिया था, 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें मिलेगी y0 की वैल्यू। सो y0 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमें सबसे पहले y0 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y1। नाउ y1 के लिए क्या करेंगे हम, f ऑफ x1, मतलब जहां पे भी x होगा इस फंक्शन में वहां पे हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर 2x1 माइनस x1 स्क्वायर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना था, x1 कितना था, x1 इज इक्वल टू 0.5, यू कैन सी हियर, राइट। सो x 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 minus 0.5 square. So here calculate the value of y1. So after calculating, the value of y1 is 0.75. Clear? Now similarly calculate the value of y2. So y2 के लिए f of x2. Here 2x2 minus x2 square, right? So 2 multiply by x2 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। सो 1 माइनस 1 स्क्वायर। सो हमें मिलेगा यहाँ पे y2, y2 इज इक्वल टू 1। मैंने कैलकुलेट करके रखा है, आपको कैलकुलेट करना है, राइट। सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y3। सो y3 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे f ऑफ x3 इज इक्वल टू 2x3 माइनस x3 स्क्वायर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x3 की वैल्यू कितनी थी, x3 इज इक्वल टू 1.5, 1.5 माइनस 1.5 स्क्वायर। सो हियर y3 is equal to 0.75, right? Similarly calculate the other values of y, like starting from the y0, y1, y2, y3, y4, y5 and y6, right? So here y4 is equal to 0 आता है, y5 is equal to minus 1.25 आएगा and y6 is equal to minus 3 आएगा. Now here starting from the y0 and ending at y6. So this y6 is also known as a y, right? So इस तरीके से हमने सारी y की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली विथ रिस्पेक्ट टू x. x की वैल्यू हमारे पास थी, x के करस्पॉन्डिंग हमने सारी y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, right? So this is the second step. Now finally after calculating the values of y, you have to use the formula for trapezoidal rule, and by using this formula after calculation you will get the final answer, that is area under the curve, right? So the third step calculate area under the curve, that is capital A, right? Area under the curve capital A by using trapezoidal rule. So here by trapezoidal rule formula is capital A is equal to h by 2 into the bracket y0 plus yn plus 2 into all remaining terms of y, remaining terms of y, right?
तो अभी हमने y की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी, y0 से लेके हमने कैलकुलेट किया था y6 तक, y6 नथिंग बट yn तक, राइट। सो यहाँ पे फॉर्मूला में आपको लिखना है सबसे पहले h/2 इज इक्वल टू y0 प्लस yn, मतलब y0 की जो वैल्यू होगी वो और yn की वैल्यू होगी वो आपको सबसे पहले लिखना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ऑल रिमेनिंग टर्म्स ऑफ y, मतलब अगर y0 और yn अगर आप छोड़ दोगे तो जो जितनी भी सारी y की वैल्यूज रहेगी वो यहाँ पे उसका समेशन आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ h डिवाइडेड बाय 2। अभी y0 मेरे पास क्या था, y0 इज इक्वल टू 0 जो कि मैंने कैलकुलेट किया है, प्लस yn मतलब y6 की वैल्यू भी मेरे पास है, तो यहाँ पे वो -3 है जो कि मैंने कैलकुलेट की थी, राइट, प्लस 2 इंटू ऑल रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ y। अगर y0 और y6 मैंने यहाँ पे लिख दिया तो कितना बचता है मेरे पास, y1 y2 y3 y4 और y5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y1 की वैल्यू प्लस y2 की वैल्यू प्लस y3 की वैल्यू y4 प्लस y5, right, all the remaining values of y. Similarly here put all the values of y, 0 plus -3 plus 2 into कितना है, y1 is equal to 0.75 plus 1 plus y3 is equal to again 0.75 plus y4 is equal to 0 plus y5 is equal to -1.25, राइट। इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी है। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द फाइनल आंसर, राइट। सो द आंसर इज -0.125। आपको आंसर इस तरीके से लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 2x minus x square dx is equal to -0.125. So this is your final answer, right? So only 3 steps you have to follow for calculating the area under the core by using trapezoidal rule. You can see here. So like the numerical is given, you have to calculate the value of h. After that calculate the value of x with respect to h. After calculating value of x, you have to calculate the values of y. After calculating the values of y, you have to use this formula, that is a is equal to h by 2 y0 plus yn plus 2 multiplied by all the remaining terms of y, right. So after calculation of this equation you will get the final answer, that is area under the curve by using trapezoidal rule. I hope ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा. If still you have any doubt, you can ask in comment section. So thank you for this session.